Ladies and gentlemen, powerful politicians get away with a lot in our country. India's top wrestlers can accuse a politician of stalking and sexual harassment, yet he will be protected by his party. It's the athletes who will be villainized. A junior coach can accuse a minister of attempted rape, yet he will be protected by the party. The charge sheet can say that the minister lied, and yet his party will believe him, not the victim. They will shield him and they will sack the victim. Ladies and gentlemen, what is happening in Haryana is more than just a boys' club coming together to protect their own. It's a powerful patriarchal government that refuses to see women as equal citizens. Sandeep Singh is a hero to many people in the world of hockey. He's a decorated sportsman who led India in the London Olympics in 2012. He's a former hockey captain, a popular face who fought the elections on a BJP ticket in Haryana and became the sports minister of the state. A sportsman as a sports minister was ideal, thought many. He would understand the needs and challenges of sportsmen. But that's not how it turned out. Last year, a junior coach accused him of molestation. She said he had seen her in a gym and started stalking her on Instagram. He kept insisting they meet. And in one meeting at his official residence in Chandigarh, she says he tried to molest her. The minister, of course, said he didn't know the victim very well and that the charges against him were baseless and false. His party backed him. He continues to be a minister in the Khattar government. But what do you do with the 700-page charge sheet that has now been filed by the Chandigarh police? Because this charge sheet is poking hole in Mantriji's testimony. The charge sheet very clearly is saying that Sandeep Singh hasn't been honest in his statements to the police and that he's refused to undergo a lie detector test. The charge sheet in black and white is contradicting claims that have been made by Sandeep Singh, both to the police and to the media. The charge sheet says there are loopholes in what Sandeep Singh said in his testimony and what the police actually have found. Here are a few examples. It's a 700-page charge sheet, ladies and gentlemen. What I'm going to show you are just a few examples. Mr. Singh clearly denied having any personal relationship with the victim. But the charge sheet is revealing that the accused was in constant touch with the lady as per call record data that have been all analyzed. In fact, the chats between the two have showed that the accused actually offered to help with the lady's appointment and transfer. Sandeep Singh said he had never offered this help, but there are snapshots of Snapchat that are showing that he did exactly that. Now, the charge sheet also mentions an IPS officer of the Haryana cadre who at that point of time was the sports director of Haryana. He told the police that the accused was taking an unusual interest in the victim. Mr. Nain was the sports director, as I said, in the Haryana government. His statement is part of the charge sheet as well. Next, during the investigation of the crime scene where this alleged molestation happened, which is his official residence in Chandigarh, the victim was not only able to identify the main office in Sandeep Singh's residence, but also the bedroom, the bathroom, the side rooms, and the passageway. All this clearly showing, according to the charge sheet, that the victim had visited all these rooms in the house. This belies Sandeep Singh's testimony that had said that the victim had only been to the office cabin. There's a third example of how Mr. Sandeep Singh has lied through his teeth. The victim's cab data, and this has been obtained by the police from Uber, shows that the victim was present at the Neta's house for over 1 hour on the day when this alleged molestation took place. This is in complete contradiction to Sandeep Singh saying that the victim was at
was at his residence for merely 15 minutes. He had told the police, how can I molest anyone in 15 minutes? Now, cab data that has been acquired from Uber is showing us that the victim was at his residence actually for over an hour. The police and the charge sheet are also saying that Mr. Sandeep Singh refused to take a lie detector test. He's also not been able to convincingly explain what the victim was doing at his office cum residence beyond the official hours of visit. Listen in to what the police is saying. एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट 25/8 को कोर्ट में सबमिट कर दी थी और उसमें अभी जो ऑनरेबल कोर्ट है उसमें सुनवाई उसकी चल रही है, तो नेक्स्ट डेट उसमें 16/9 लगी हुई है। मामला पुलिस ने कोर्ट में भेज दिया है वर्डिक्ट के लिए, तो मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, इस पर मैं और कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। Now, we in the media are not judge, jury and executioner. Ultimately, it is a court of law that will have to find whether Mr. Sandeep Singh is actually guilty of molesting this junior coach or not. But what is the job of the Haryana government? Very clearly, you have a charge sheet against your neta. He's still a minister in your government. The charge sheet is saying that Sandeep Singh has not been honest. The charge sheet is saying that there are discrepancies and contradictions in his statement, that he knew the victim well, that the victim knew the layout of his house. And yet, you have decided to protect this man. Why have you decided to protect this man? Women voters constitute 50% of the voting percentage in this country. 50%. Women overwhelmingly vote for the BJP. The BJP constantly tells us, Beti Bachao, Beti Padhao. Is women's safety a joke in Haryana, where a minister who is being accused of molestation and attempted rape will be protected, will continue to be a minister in your government despite the grave charges against him? And yet this junior coach who has made these charges will be painted as the villain and sacked from her job. That is what has happened a couple of weeks ago. She has been sacked, but he continues to be protected. Listen in to what the Haryana government is saying. संदीप सिंह को लेके लगातार ये बात की जा रही है कि क्यों नहीं उनको कैबिनेट से सैक किया जाता, क्योंकि अब चार्जशीट भी फाइल हो गई है और चार्जशीट में ऐसी चीज़ें बाहर निकली हैं कि जिसमें बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन आई है। आप पॉलिटिकल एडवाइज़र टू मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को विधानसभा में भी ये क्वेश्चन किया था, उस समय उन्होंने कहा था सब जुडिस। आपको लगता नहीं कि मॉरल राइट्स पे भी अपोजिशन डिमांड कर रही है कि रेजिग्नेशन देना चाहिए, उनको बाहर निकाल? देखिए, 2 बार मुख्यमंत्री जी ने ये विधानसभा के पटल पे कहा कि किसी के खिलाफ कोई ब्लेम आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं बनता, परंतु यदि दोषी सिद्ध होगा तो हम रिजाइन लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। आज भी हमारी नीयत हमारी पार्टी की है, मेरे मुख्यमंत्री की, हमारी सबकी एक ही सोच है। उस बात पे मुख्यमंत्री जी उसको अधिकार क्षेत्र की बात है, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है बड़ी सोच समझ के कही है, और यदि कहीं कोई ऐसी बात होगी तो रिजाइन ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हमारा कार्यकर्ता है। और आज तो चार्जशीट होगी, चार्जशीट में सब कुछ लिख दिया, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइल। मैं आप ही की तो बात कह रहा हूँ ना, ये अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का है और मुख्यमंत्री जी ठीक समय पर ठीक निर्णय लेंगे। My guest this evening, Professor Vidhu Rawal, spokesperson of the Haryana BJP. Swati Malik is spokesperson of the Congress Party. Dr. Sunita Godara is an Asian Marathon Champion, 1992, joining us on the broadcast. And Karuna Nandi is an advocate at the Supreme Court. Karuna Nandi, we've just heard from a representative of the Haryana government who, after the charge sheet has been filed and after the charge sheet has said what it has said, says, आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं बन जाता. Essentially saying this is just a charge sheet. These are just allegations. He's someone who's just an accused and nothing else. His guilt has not been proven. Why should we sack him? How should we read the charge sheet that the Chandigarh police has filed? There are a number of stages in criminal trial.
at the initial instance, if the offense is something that is cognizable, then there's all sorts of law says that the FIR must be registered. Now, when there is a person in a position of power who commits sexual harassment, which under the current regime, under the current IPC is Section 509, Section 354A, amongst others, then the FIR has to be registered, right? Like there's no option but to register the FIR, and yet it is extremely difficult to do so when the person is in power in the ruling government, because the state police reports to the government. And yet, here, the FIR has been registered. So the FIR has been registered and the charge sheet only comes in after the investigation is complete. And the police has decided that the allegations of the prosecutrix hold up enough to go ahead. And that it's not just something that she felt and that was not supportable by evidence, but it's something that a court must decide. So at this stage, where the charge sheet has been filed and the case is progressing, then to not take action, internal action against their own member, at the very least to suspend him, is shocking, you know? And let's leave alone the fact that not the BJP and, you know, a lot of these political parties, none of the political parties, in fact, have an adequate mechanism of training, an internal policy, penalizing framework, and an internal committee. Why should only private workplaces have to go through this? Surely political parties are also workplaces. And I would love to hear from every single party here at the moment, but let us keep focus that the person in the dock is a BJP minister. This is the ruling party. There is an additional burden on them. Professor Rawal, women have overwhelmingly over the past many years voted for the BJP, not just in Haryana, but across the country. But free cylinder dene se kya hoga? If you cannot respect women and protect them in your own state. You have chosen to protect your minister and retain him as a minister, and you have chosen to sack the coach, the junior coach, who made these allegations. ये कहाँ का justice है? ये राम राज्य नहीं, ये जंगल राज है। आपका श्रेया जो क्वेश्चन है वो अप्रासंगिक है, मतलब आपने कंटेक्स्ट को कहीं से कहीं जोड़ा है। सैकिंग ऑफ कोच इज फॉर डिफरेंट रीजन, उसके लिए कोच को पूरा मौका दिया हुआ है, कोच अपना जवाब दे रही है, वो दूसरे रीजंस पर है। ठीक है, कोच जरूर चाहेगी कि इन चीजों को जरूर जैसे भी मिक्सअप हो, लेकिन पॉइंट यह है कि इस जो पर्टिकुलर इशू है इसमें कोच को जस्टिस जो है दे रहा है। दोनों प्रोफेसर रावल दोनों मिक्सअप कैसे नहीं होंगे? प्रोफेसर रावल दोनों मिक्सअप कैसे नहीं होंगे? देखिए, एक हमारे व्यूअर, सुनिए जरा, एक सिटीजन और एक व्यूअर की नजर से भी देखिए। एक सिटीजन प्रोफेसर रावल और एक व्यूअर की नजर से भी देखिए। सिटीजन और व्यूअर क्या देख रहा है? इस देश का सिटीजन क्या देख रहा है? देख रहा है एक नेता है, हाँ, उन्होंने देश के लिए ग्लोरी लाया। एक मिनट, हाँ एक मिनट सुन लीजिए, आप बता दीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बता दीजिएगा। वो देख रहा है कि एक नेता है, एक नेता है, श्रेया ढोंडियाल has chosen herself, has assumed herself to take the role of judge, jury and executioner. सिटीजन ये देख रहा है कि आपने यहाँ पर एक चार्जशीट आई है जो न्यायालय के अधीन है। आपने चार्जशीट पर जब दोनों पक्ष में अपनी अपनी बात रखेंगे, whether the charges have been substantiated with some kind of evidence that can hold water in the presence अरे of court. प्रोफेसर रावल खुद चार्जशीट तो थोड़ी पढ़ लीजिए। Before questioning me, at least read the charge sheet. At least make an attempt to read the charge sheet. I have just detailed for all our viewers what the charge sheet is saying. There is no point. मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। I am going to allow you, but you are not. नहीं प्रोफेसर रावल, आपको बुलाने की जरूरत थी। ठीक है, तो आप जरा रुक जाइए एक सेकंड। प्रोफेसर रावल, आपको बुलाने की जरूरत थी तो सुन ले। I request you to hear me out for 1 minute. नहीं प्रोफेसर रावल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए ही आपको बुलाया है मिस्टर प्रोफेसर रावल। आपको सुनने के लिए ही प्रोफेसर रावल। हाँ, तो आप जरा एक
तो आप 20 सेकंड्स और वेट करिए। मैं आपसे पूछ रही थी, देखिए अब आपने गोलमोल बात घुमा दी और 30 सेकंड्स वेस्ट लगे। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप कह रहे दोनों को मिक्स मत करिए। आप एक सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अरे प्रोफेसर रावल रुक जाइए ना, रुक जाइए। मैं कह रही, मैं आपको ये पूछने की कोशिश कर रही हूं, आप देखिए सिटीजन क्या देख रहा है। सिटीजन ये देख रहा है कि एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, एक जूनियर कोच ने अक्यूज किया उसको ऑफ मॉलेस्टेशन, ठीक है, ये देख रही है। फिर दुनिया और सिटीजन जो वोट करता है, टैक्स पेयर है, वो ये भी देख रहा है कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है कि खट्टर सरकार ने अपने आदमी को तो बचा के रखा है, उसको फॉरगेट एनीथिंग एल्स मंत्री पद पे भी रखा हुआ है, लेकिन वो जो कोच है, एक सेकंड, वो जो कोच है उसको सस्पेंड कर दिया है, और आप मुझको कह रहे हैं कि दोनों को मिलाइए मत। अरे जनता बेवकूफ थोड़ी ना है प्रोफेसर रावल। एनी हाउ, नाउ यू गो अहेड एंड मेक योर पॉइंट। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप मुझे अनइंटरप्टेड बोलने देंगे। चलिए, अभी पहली बात तो ये है कि व्यूअर्स ये देख रहे हैं कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी का जो मैक्सिम था, जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को अब तक गाइड करता था, उसको टॉस पर ले लिया है। अभी आप ये अज्यूम करके बैठी हैं कि जिसने एलिगेशन लगाए हैं वो एलिगेशन बिल्कुल ठीक होंगे, जो कि हो सकते हैं, which may be right। वो तो कोर्ट, इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। जैसे ही कोर्ट कोई डिसाइड करता है, जैसे ही कोर्ट की अगेंस्ट भी डिसाइड करता है या फेवर में करता है, अभी न्याय दोनों पक्षों को मिलना है, जिसने एक्यूजिशन लगाई है उसको भी और जिसके अगेंस्ट ये एक्यूजिशन लगी है उसको भी, दोनों लोगों को न्याय मिलना है। आप यू कैन टेक साइड्स बट आई कैन नॉट। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर इसमें पाया जाएगा जांच में, अगर कोर्ट ये फाइंड आउट करता है कि संदीप सिंह जो है इसमें गिल्टी हैं, तो बीजेपी विल बी द फर्स्ट पार्टी टू सैक हिम। मैं यहां पर आपके टीवी डिबेट पर कर रहा हूं। और क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में संदीप सिंह स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आपके पास ऑप्शन क्या और होगा? ये डिपार्टमेंट जो था, मैं एक बार मुझे पूरा करने दीजिए, आपकी बात आ जाएगी। क्योंकि ये डिपार्टमेंट डायरेक्टली स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर था, जो एलिगेशन लगाने वाली थी वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर की एम्प्लॉय थी। बीजेपी गवर्नमेंट ने मनोहर लाल खट्टर जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, किसी ने डिमांड नहीं किया था। सबसे पहले खेल मंत्रालय जो है संदीप सिंह से ले लिया गया। डू नॉट फॉरगेट, संदीप सिंह ने भी भारत को रिप्रेजेंट किया, ही हैज ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया, हैज बीन इंडियन कैप्टन, हॉकी कैप्टन। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको सजा मिलेगी। अब रही बात आपकी कि किसी ने किसी को सैक किया गया, आप, मुझे अच्छा लगता अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके आते और ये पता करते कि सैक करने का जो नोटिस दिया गया, सैक भी नहीं, सस्पेंड करने का नोटिस दिया गया था, सैक इज अ रॉन्ग वर्ड, वो नोटिस किन चार्जेस की वजह से दिया गया था, वो एक डिफरेंट मैटर है। दोनों चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कीजिए। लेकिन आपको फिर ये भी पता होना चाहिए, जब आप, वैसे तो मामला न्यायालय के अधीन है, जब फैक्ट्स पर इतना डिस्कशन चल ही शुरू हो गया, जब एक वन फाइन नाइट यू हैव डिसाइडेड कि कोर्ट्स को बंद करके आपकी डिबेट्स को ही कोर्ट्स बना लिया जाए, तो चलो फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो एलिगेशन है ना, जो एलिगेशन जिस दिन का है, वो कोई जुलाई अगस्त के समय का है। और उसके बाद दिसंबर के अंदर यही महिला कोच का एक हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्रांसफर का ऑर्डर आता है, जिसके अगेंस्ट वो जाकर कहीं पर कोई फाइल नहीं करती कंप्लेन, एक विपक्षी पार्टी के ऑफिस में जाती हैं वो महिला कोच, और वहां जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। तब तक कोई कंप्लेन नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चार्जेस देती हैं कि मैं 400 मीटर की मैं एथलीट हूं, लेकिन जहां मेरा ट्रांसफर कर दिया गया वहां 200 मीटर का ग्राउंड है और ये मेरे साथ अन्याय है। और उसके बाद वो शुरू करती हैं कि उनके साथ उससे पहले क्या क्या अन्याय हुए, और उसके अगेंस्ट वो कंप्लेन करती हैं 29 दिसंबर 2022 को। और 2 दिन के अंदर अंदर ये मामला जो है एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, और साथ साथ ये एक एसआईटी फॉर्म कर दी जाती है, जो कि आउट ऑफ हरियाणा, ये इस मामले की जांच हरियाणा से बाहर हो रही है, ये भी पता कीजिए आप, हरियाणा के अंदर नहीं हो रही है। तो पावर को रिलेट करना गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, यू हैव टेकन साइड्स, वेलकम। आप देखिए, मैं होप करूंगा कि आप, प्रोफेसर रावल, और कोर्ट, I have taken sides and so has the Haryana government. You have accused me of being judge, jury, executioner. But it's the Haryana government and the Haryana government spokesperson who is represented, who you are representing, who have made up your mind. You're saying उसने तो political party के साथ press conference की, उसने तो political party के साथ press conference की, इतने दिनों बाद क्यों उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की? That is why we have not sacked our minister. So you all have already made up your mind that Sandeep Singh is correct and the woman is the one who is lying.
right? Professor Rawal, Professor Rawal, it is the Haryana government that you are accusing me of being judge, jury and executioner. No, Professor Rawal, you just accused me of being the judge, jury and executioner. My point is the Haryana government itself has decided without the investigation that Sandeep Singh is innocent and this woman is guilty and is lying, right? Because of which she has been sacked and he has been protected, right? Okay, now you have brought the politics in as well. So let me get in Swati Malik. अरे रुक जाइए भाई, और लोग भी हैं ना पैनल में. नहीं फिर एलिगेशन मत लगाया. अरे बहुत टाइम है, आप एलिगेशन का जवाब देते रहिएगा. लेट मी, अरे रुक जाइए, स्वाति सिंह को आने दीजिए, रुक जाइए ना. No, don't try and hijack this. I will come back to you, Professor Rawal. I'm promising you, I'll come back to you. कोई बात नहीं, आपने भी मुझ पे एलिगेशन लगाया, कोई बात नहीं. That is the nature of Indian TV debate right now. You have put an allegation on me and I have put an allegation on you. But anyway, let's bring in other people. I promise I'll come back to you. I want to hear from you. I'll come back to you. But Swati Malik, just respond to all that has been said over the last 5 to 6 minutes by Professor Vidhu Rawal. He's essentially implying that the entire thing that has played out since last year is actually a political conspiracy and nothing else. Shreya, are you surprised with that defense? I am not. You look at the stand whenever there are any complaints made by women against these sitting ministers of BJP, that's the first thing they say. This has been said now about Mr. Sandeep Singh. Earlier it was said to protect the Wrestling Federation president. Before that, the government has been quiet. Whenever it comes to women-related issues, the BJP is only protecting and enabling those who have been accused, those who have been charge-sheeted. They have only been enabling them. Why is the Khattar government and Mr. Khattar going on giving these statements blatantly protecting the accused? Why are they not protecting or giving that sort of confidence to the complainant who's filed this complaint? They've always done it. Be it Unnao case, be it Hathras, be it Manipur, be it the wrestlers, and now this. They have only protected the accused. And it has been their stand throughout. What is it? What is it that stops the BJP government from withdrawing all portfolios from Sandeep Singh? Why just the Ministry of Sports? He continues to be a minister for printing, press, or stationery department, whatever, some departments still be with him. So he continues to be a minister. How will there ever be a fair, adjudication of this? How will the complainant ever feel protected? Never. It's not going to happen. Please understand, Shreya, today there is such a trust deficit between the government and the citizens. बीजेपी के एक हिंदी में कहावत है, कथती और करनी में बहुत फर्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा बोला था पिछली 15 अगस्त पे about women empowerment, about बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. Of course he stammered and said many inappropriate things himself in his while he was reading out from the teleprompter. But he's only said it. Where is the करनी? आपने कह दिया, but करने को आप क्या आए हो? आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो जिनके खिलाफ इस देश की बेटियां, इन्होंने बड़े very proudly he said Sandeep Singh brought laurels to the country. Have those women not brought laurels to the country? And just because he's a sports person, he got us the Olympic medal. Does that give him a right to molest whoever he wants to? What is audacity? Look at the explanation. And then they say, guilty karne hone dijiye, pata karne dijiye, we will sack him. What other, like you rightly said, what other option do they have? They have nothing. And they are shameless. This government is shamelessly protecting all these people one after the other. And Shreya, thank you for actually having this debate. Okay. Surprisingly, there are no other channels. Nobody is discussing this. So thank you for actually having this debate at this right time. Yeah, but the charge sheet is out. You couldn't ignore it, Swati. The charge sheet very clearly is saying, I'm not making this up. In fact, we have graphics running there that is saying that Sandeep Singh has been dishonest. That he's refused to go through a lie detector test. That there is, in fact, one IPS officer who's on record in the charge sheet saying that Sandeep Singh took an unusual interest in the victim.
The charge sheet is there. It's damning. There's no way you could ignore it. Dr. Sunita Godara, how long will the Haryana government ignore the piling evidence against Sandeep Singh? As long as they will say that the court of law will take its own course. See, court of law is very, very slow. Everybody knows it. First of all, if we depend on court of law, it will take time, maybe 10 years, 20 years. So one thing is this. Another thing is politics. There is bad politics and good politics. Now, here, I hope that good politics prevail. And good politics, what is good politics? When you are dealing with people, you have to take care of their issues, their problems, and bring the solutions. Whereas in this case, there is no solution. So instead of having good politics, there is bad politics going on. Now comes to the sports, because this is the issue of sports. Our sports law says very clearly in the Ethics Commission that any behavioral misconduct, life ban from sports for that person, which has not happened. Do they have the Ethics Commission in Haryana Sports Department? Do they have Ethics Commission? And mind it, IOA has that. And IOA is the supreme body of all sports. They can also take suo motu action whenever these things are happening. So, one Brij Bhushan in UP, one Brij Bhushan type of person, Sandeep in Haryana, and they are just roaming around free because the court will take its own course. And it may take 10 years, 20 years. By then, girls are always crushed, which is happening everywhere, not in only Haryana. They have to create a system where we have redressal system and the female can go and complain. Not only female in sports coaches, junior staff. Where will they go? These things will keep happening. It's not only here. I don't know where all it is happening. And court of law will take its own course. So don't speak anything. Why? Why? But it has to. Karuna department will take action. But no. I'll let Karuna Nandi come in here. The court law has to take its own course, Karuna Nandi. You can't afford to be in a situation where someone who's not guilty ends up getting punished. So law has to take its own course. 100%. It's inconvenient, it takes too much time, but that's the only way. There is no doubt that the law must take its own course. Nobody is disagreeing with that. But I think the point is that does the law in fact take its own course when it comes to Sengar, Kuljit Singh Sengar from Unnao, where a father was killed. He was a BJP member and I think he was possibly a minister. There's so many of these examples that the specifics I can't fully remember, but he was a BJP member. I think he was an MLA. I don't know whether he was a minister or not, but he was a person in a position of power. The father of the victim was killed in custody. In custody. As in the father was not in custody, but he was in the precincts of the police station. Even in this case, you were telling me that the prosecutrix was transferred. This man, on the other hand, is roaming about with a ministerial position. Like she's been transferred to Jhajjar. He is roaming around with a ministerial position. What kind of justice is that? It took 6 months, I believe, to register the FIR, right? And who has control over the police? The Prakash Singh reforms have not been implemented. And so currently, the police reports to the state government. So given that our courts are hugely overburdened, in part because the BJP government has not, agreed to the 3 judges case division of powers and does not just automatically appoint everyone that the collegium recommends, which is something they should be doing, unless there's something very, very concrete against them, right? We don't have enough courts. We don't have enough infrastructure, and it takes a long time for cases to be decided. So given this situation, a charge sheet has been filed against this man. How many other people have to suffer due to the imbalance of powers, this huge imbalance of power, right?
There's always an imbalance of power. But when there is this massive imbalance of power, and when it is a minister who has already demonstrated his power, because for 6 months the FIR could not be registered. The fact is that already the police is saying that there was some incident where she has alleged sexual assault, which they are not progressing against in the charge sheet, right? How long will the people of Haryana have to suffer this kind of nonsense? And the women of Haryana? And if Olympic medalists of Haryana have to continue to suffer, have to be dragged through the mud by the police with a boot on their face after being sexually assaulted and harassed, the average woman, what hope does she have? How is this acceptable? Professor Rawal, that is the larger question. It is not just the question of Sandeep Singh and this young coach in Haryana. You know, there is a larger story at play. There's a larger pattern at play, which is why fingers are getting pointed at the BJP government, whether it is at the center or whether it is in the state of Haryana. चलिए, देखिए, आप अगर सिलेक्टिव अगर यहाँ पर ट्रायल करना चाहती हैं तो इट इज गुड, ठीक है, सभी लोग एक ही तरह की बात बोले। मुझे अब तक ये नहीं समझ आ रहा, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी को खत्म कर दिया क्या, डस्टबिन में डालकर फेंक के फेंक दिया क्या हम लोगों ने? जब तक कोई प्रूव नहीं होता गिल्टी तब तक उसको इनोसेंट एज्यूम किया जाता है। इस बात को हम भूल जाएं क्या, या सिर्फ संदीप सिंह के मामले में इस बात को ध्यान करेंगे, या सिर्फ अन्य लोग जिनका नाम लिया गया? और मैं कांग्रेस प्रवक्ता की एक के बाद एक पूरी लिस्ट वो बता रही थी, मुझे लगा वो थोड़ी देर में प्रियंका गांधी का जो असिस्टेंट है उन पर जिस प्रकार के सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे हुए हैं, मोलेस्टेशन के लगे, उन पर भी बोलेंगी कुछ। किस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा युवा मोर्चा के, उन पर लगे हुए हैं चार्जेस और खुद कांग्रेस की नेत्री ने लगाए हैं, उस पर भी शायद बोलेंगी। लेकिन इनका भी हाथरस और उन्नाव के बाद आकर जो है खत्म हो जाता है गाड़ी के अंदर से फ्यूल जो है, ये राजस्थान तक नहीं पहुंच पाई सारे के सारे। लेकिन मेरा अगेन ये कहना है, कहीं पर भी कोई भी घटना होती है उस पर कानून अपना काम करेगा। अब रही बात दूसरी जो लंबी बात हुई कि कोर्ट्स बहुत समय लगा रही हैं न्याय देने में, ये एक बिल्कुल वास्तविक बात है, कोर्ट बिल्कुल समय लगा रही है, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जानी है। कोर्ट्स को भी जो है ये हमेशा इस पर दबाव रहता है। प्रोफेसर और चाहते भी हैं इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी की बात कर रहे हैं जी, आप इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी की बात कर रहे हैं, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं भूली, नहीं मैं बिल्कुल नहीं भूली। इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। मैं सुप्रीम कोर्ट की एक मिनट रुक जाइए, मैं सुप्रीम कोर्ट एक मिनट रुक जाइए, मैं सुप्रीम कोर्ट की ये बात भी नहीं भूली हूं कि दैट बेल इज द नॉर्म, जेल इज द एक्सेप्शन। इसलिए मैंने एक बार भी ये नहीं बोला संदीप सिंह को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा, क्योंकि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट क्या बात बोलता है। और आप जो बोल रहे हैं बात दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं प्रोफेसर रावल आपसे फिर एक बड़ी सिंपल सी बात पूछ रही हूँ, बहुत सिंपल सी भाषा में। चार्जशीट आपके सामने है ना, 700 पेज की चार्जशीट है, जरा पढ़िएगा और मनोहर लाल खट्टर जी को भी बोलिएगा जरा पढ़ लें अगर उनके पास समय निकला है, और देख लें कि वो चार्जशीट जो चंडीगढ़ पुलिस ने फाइल की है वो चार्जशीट क्या बोल रही है। एक मिनट रुक जाइए, वो चार्जशीट क्या बोल रही है? वो चार्जशीट बोल रही है दैट योर मिनिस्टर हैज नॉट बीन ऑनेस्ट, योर मिनिस्टर हैज रिफ्यूज्ड टू टेक अ लाई डिटेक्टर टेस्ट एंड योर मिनिस्टर ऑन मोर देन 6 occasions स्पेसिफिकली, एक मिनट, ऑन मोर देन 6 occasions चार्जशीट बोल रही है झूठ बोला है उन्होंने, एक के बाद एक झूठ बोला है। आपका मिनिस्टर है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ये बात बोल रही है कि वो झूठ पे झूठ बोल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं व्हाई शुड वी रिमूव हिम, ही इज इनोसेंट until proven guilty. If that is your stand, the citizens of this country are seeing your stand, and the Haryana women of Haryana are also seeing this stand, and you will have to pay for this stand. Because as I said, जनता बेवकूफ नहीं है, गलत होता है और सही होता है। आपने I have 10 seconds. I have 10 seconds. No more than that. बोलिए, 10 सेकंड में खत्म कर दीजिए। 8:37 हो रहा है, ब्रेक भी लेना भाई। थैंक यू सो मच। लेकिन पॉइंट ये है मेरा, भाई मेरा शो है ना, मेरा शो है, मैं जो भी करूं, लेकिन आप पर्सनल हो जाते हैं, आपके साथ प्रॉब्लम ये है प्रोफेसर रावल। हाँ
I'm not heckling you. I'm saying आप personal मत होइए. Make your point. Anyway, 10 seconds quickly. We'll wrap the show after that. आपकी बात को ठीक प्रिज्यूम कर लेते हैं और मुझे लगता है कि अगले जो आपके जो पैनलिस्ट ने भी कहा कि कुछ साल खराब क्यों करने कोर्ट के अंदर, आपके इसी शो के हिसाब से हम तुरंत जो है संदीप सिंह को सजा दे देते हैं. कोर्ट्स की जरूरत ही नहीं है. मैं तो कह ही रहा हूं, अभी संदीप सिंह को चार्जशीट किसने फाइल किया है? अभियोजन पक्ष ने किया है. अभियोजन पक्ष के आगे अभी संदीप सिंह का वकील भी खड़ा होगा कोई ना कोई, और वो भी अपनी बात रखेगा. जो चार्जेस लगे हैं उन चार्जेस में कितना दम है, इस बात को कोर्ट के सामने दोनों लोग जिरा करेंगे. लेकिन आपने उसकी जरूरत नहीं समझी क्योंकि चार्जेस लग गए, इसलिए उस पर जो है तुरंत आप यू वांट टू पाउंस ऑन हिम. ठीक है, कीजिए, लेकिन ये फिर सिलेक्टिव ना कीजिएगा. आज के बाद कोर्ट बंद कर सिर्फ जैसे चार्जशीट हो जाए उस तुरंत सजा मिल जानी चाहिए. कोर्ट्स का इसके बाद चार्जशीट के बाद कोई रोल नहीं रहना चाहिए, कोई चार्जेस फ्रेम नहीं होने, कोई ट्रायल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि Professor Rawal, again, I'll come back to the same thing. You are accusing me of already declaring Sandeep Singh guilty, and I am accusing the Haryana government of declaring Sandeep Singh is innocent despite all the charges on day 1 of the FIR being lodged. तो आप जरा अपने गरिबान में भी झांक के देख लीजिए. आप जरा अपने गरिबान में भी झांक के देख लीजिए. You can accuse me of whatever you want to accuse me of, but at least see what the Haryana government and the Khattar government are doing. Retaining a man not just as a minister, but sacking the woman who has actually accused him of sexual harassment. अच्छा प्रोफेसर रावल, हो गया. अब अरे रुक जाइए, बहुत टाइम दिया है आपको, बहुत टाइम दिया. चलिए, टाइम खत्म. भाई मेरा शो है, मैं भी तो बोलूंगी. शो का टाइम खत्म हुआ है लेकिन जस्टिस का टाइम शुरू हुआ है. चलिए, जस्टिस का टाइम शुरू हुआ है. सो आई होप women of Haryana get justice under the Khattar government. मुझे पूरा विश्वास है. I hope that women of Haryana get justice under the Khattar government. I hope women of Haryana get justice under the Khattar government, Professor Rawal. I hope that happens for the women of this country and for the citizens of this country. Professor Rawal, वो तो हमने देख लिया है. पिछले 6 महीने में वो तो हमने देख लिया. Anyhow, we leave it there for the moment. Thank you very much. Swati Malik, thank you very much. Dr. Sunita Godara, thank you very much. And Karuna Nandi, thank you very much as well for joining us. I'm slipping into a quick break on the show. There's more coming up on the other side. Do stay with us.